Hello guys, welcome to my channel Clarity First. Today we are going to do chapter 1 of our book Indian Constitution at Work, right? In the last lecture what we have done preamble. We have read about the keywords in the preamble, and I have told you something, that the provisions of the Constitution are nothing but the amplification of the keywords present in the preamble. Right? Today you will see the application of it to some extent, not to a very greater extent, but to some extent you're going to see that. And as we progress, we'll see so much of application helping there. Okay. All right. So today we are going to do chapter 1. I have already told you that I'm not going to read the chapter line by line, right? I'm not going to read it. I have prepared some notes for you and I'll teach you through those notes. And one more thing, I'm not going to do the whole chapter in one lecture only, right? I have told you that I will be preparing videos for the lecture in parts. I think this chapter we should be able to complete in 3 parts. Let's see how it goes. I can't commit more as of now. Okay, so at least for this part, I can tell you we are going to do the functions of the Constitution. Right? So let's begin. Yeah? All right. Also, one more thing I forgot mentioning. I have prepared the notes for you. If you want these notes, just write in comments. I will get you with a PDF of this notes in a better format, as you will see now. Okay. So let's start. Chapter 1. Why do we need constitution? Right. Chapter 1, constitution by and how. Now there's a question, why do we need constitution? क्यों चाहिए हमें constitution? Right. Now I've gotten some situation for you. You can read it. See, this is something I've created for you, that if you read it like after some time, you'll be able to recall all of it, right? With these anecdotes, with these situations, whatever you want to call it. All right. Imagine there are no traffic rules, right? There exist. Let me change the pen. There exist no traffic rules. कोई traffic rule ही exist नहीं करते हैं. Everyone drives on whichever side they like. They're going to drive on whichever side they want. All right. They stop, move whenever they want. So, what is going to happen? This is my question to you. Think about it. क्या होगा अगर कोई ट्रैफिक रूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे? वी स्टॉप ऑन रेड लाइट्स. ठीक है, एक साइड का पैसेज ऑन हो जाता है, देन एक साइड का पैसेज ऑफ हो जाता है, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, राइट? नाउ इफ देर आर नो ट्रैफिक, है ना, रेड लाइट है ही नहीं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वन ऑफ विच इज दिस. तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज गोइंग टू बी केओटिक. केओस हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे. तो क्या चाहिए हमें अल्टीमेटली? केओस हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे. तो क्या पीसफुली आप ड्राइव कर पाओगे विदाउट ट्रैफिक रूल्स? नो, you will not be able to drive peacefully, right? So what do you need? We need rules, right? So traffic rules are not going to stop you from choosing your destination, right? It will simply help you drive or help you reach
peacefully. राइट, अल्टीमेटली यही होने वाला है ना, क्यों हम रूल्स बनाते हैं, है ना। रूल्स हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि पीसफुली अफेयर्स को कंडक्ट किया जा सके, राइट। ओके, सिमिलरली सोसाइटी ऑल्सो नीड्स some agreed rules before which it can function smoothly. So now I'm coming to the first function. Please try and understand. ये तो एक एनेक्डोट था आपके समझने के लिए, so that you understand the need of rules, right? Now we are coming. So India is one of the most diverse countries in the world, and you know that, right? There are, just a second, all right. There are different religious backgrounds, है ना। कास्ट है, कास्ट तो न्यूमरस है, thousands of caste are there. वर्णास आर 4, ठीक है। कास्ट तो बहुत है, ठीक है। रिलीजियस बैकग्राउंड्स, कास्ट, लैंग्वेजेस, cultures, different geographies. See, when there are different geographies, so diversity will itself come. I don't want to go much in detail, but let me tell you, a person living in, say, coastal area is more likely to consume seafood, है ना। And a person living in, say, deserts of Rajasthan, वहां पे a person is more likely to consume coarse grains. तो देखो इनके ईटिंग पैटर्न में डिफरेंस आ गया बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ने इन्फ्लुएंस किया कल्चर को। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज जस्ट वे ऑफ लाइफ, है ना। कल्चर क्या है? वे ऑफ लाइफ ही तो है। सो इतनी डाइवर्सिटी है, अगर आप कुछ बेसिक रूल्स पर नहीं आएंगे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर आर गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। Just a second, let me erase this. All right, there's a lot of diversity that exists. Excuse me. All right, there's a lot of diversity that exists in India. As there is so much diversity that without rules, this will end up in conflicts. And different people would want things to go in different way, right? So we need to agree on some very common and basic rules so that we live or we conduct daily affairs peacefully. कुछ रूल्स पे तो अग्री करना पड़ेगा ताकि हम लोग पीसफुली रह सके। There should be something that should bind us. This is connected to the fifth function that I'll teach you in the next lecture, right? कुछ होना चाहिए ना जो हमें बाइंड करके रखे, जो रूल्स क्रिएट करे जिसकी वजह से हम पीसफुली रह सके, राइट। दिस अग्रीमेंट is reflected in our constitution, right? There are some very common basic rules that are there in the constitution so that daily affairs are conducted peacefully without any chaos, without any conflicts. Now, see, a very beautiful line, I have got it from somewhere. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट। हर एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल नहीं कर रहा है। इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू विथ सम बेसिक रूल्स दैट अलाउ सोसाइटी टू फंक्शन स्मूथली, राइट। अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग? देयर आर सम बेसिक रूल्स। तो अभी
हमने इतना समझा है that constitution, excuse me for the handwriting, I'm trying to get used to this pen. So, constitution provides with some basic rules, right? For smooth functioning, कह सकते हैं ना, स्मूथ फंक्शनिंग हो एक स्टेट की. राइट, इतना समझ लिया. अब इस एक और सिचुएशन पे आओ. लेट मी चेंज माय पेन. ओके, so let me get red again. All right. Suppose a teacher leaves the classroom for 10 minutes and says, maintain discipline. This is something you might have encountered a lot. है ना, ये तो बहुत बार आपने देखा होगा कि टीचर को जाना पड़ता है क्लासरूम छोड़ के, एंड शी सेज दैट मेंटेन डिसिप्लिन. हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली मेंटेन्स द डिसिप्लिन, मीनिंग स्टेज साइलेंट, है ना. साइलेंस रहती है क्लास. कब होता है ऐसे? डू यू थिंक एवरीवन विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन? आई डोंट थिंक सो. टीचर के सिर्फ कह देने से कि यार डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आई विल बी कमिंग in some time, will you really maintain that discipline? Will you really stay silent? Will you really focus on your work? I don't think so. Even I have not done it in my school days, right? But now imagine the teacher says anyone who creates a disturbance will stay back after school. Now this is creating what? A fear of consequence. कॉन्सिक्वेंस मतलब फाइनल रिजल्ट, है ना. क्या होगा अगर मैं अब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करूंगी, अब साइलेंट नहीं रहूंगी? आई विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल. ओ माय गॉड, अब तो आई विल मेंटेन द डिसिप्लिन, राइट. नाउ स्टूडेंट्स विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन, राइट. वी राइट, यस. रूल has consequences, it can be enforced. यही तो है enforceability. Sorry, this is what enforceability is. Now when you say that the rule is made and it will have some consequences, this is what enforceability is. I've written a very beautiful definition. Enforceability means that a rule is not just written. Your teacher is not just saying you that you have to stay silent, you have to be disciplined, but also it can be implemented if someone breaks it. There are consequences. If a rule is violated मतलब you're getting new words. Violated मतलब उसका उल्लंघन कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो. So if a rule is violated, there are going to be consequences, right? All right. So this is the first function of the constitution. I hope you have understood. We have understood it at length. ठीक है? Let me get it. All right. हमने violated समझा. मैं लिख देती हूँ यहाँ violated. Okay. Violation समझा क्या होता है? All right. So now let me take a different color. Okay, maybe I'll take green. The Constitution provides a basic set of enforceable rules that ensure minimal coordination and peaceful functioning of the society. देखो ये थोड़ी सी technical language मैंने करी है, because ultimately when you will write it in your answer sheets, you're not going to give such examples that I've given you to understand, right? So the Constitution provides a basic set of rules. तो हम बोल ही रहे थे, इसको कह दो एनफोर्सिबल रूल्स. एनफोर्सिबल रूल्स मतलब जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे, देन देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस. ऐसे रूल्स का क्या मतलब जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ही ना हो?
right? If you don't follow traffic rules, you know you're going to be fined, and this is the reason why you follow those traffic rules. अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करना है, नहीं तो फाइन लग जाएगा, you will be more cautious. You'll think about it over and over again. No, that I have to follow this rule. Otherwise, I will have to bear the consequences. And this is what it is. So, Constitution provides a basic set of enforceable rules that ensure minimal coordination. Minimalistic coordination है, बहुत ज़्यादा restrictions नहीं डाल रहा है Constitution आप पे. एक minimalistic coordination रहेगा so that it will ensure peaceful functioning of the society. I hope you are able to understand. Again, I have written this definition so that you get it clear. Okay. So, enforceable means rules can be implemented if violated. We have understood a new word. Violated meaning what? Think about it. I've told you here. Not following. बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है. वायलेटेड मतलब नहीं फॉलो करा तो एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द वायलेटर. दिस क्रिएट्स फियर. दिस क्रिएट्स deterrence. All right. ठीक है. So this was the first function. So I've written the function with some different format. This in a very bold format that if I provide you this PDF, you will be able to understand the whole explanation and then the technical language that is provided after the whole explanation, right? All right. तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसका ही थोड़ा सा एलैबोरेशन समझो. So the Constitution does not try to make everyone the same. ये नहीं करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. एक्नॉलेज करता है ना अलग अलग कास्ट को, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग लैंग्वेज को. इसीलिए तो हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज. This is what our constitution recognizes, right? It simply creates a common framework within which different people can live together, right? So, it accommodates diversity. And what is diversity? What is diversity? Major characteristic of Indian society. Indian society is characterized by diversity, guys. No? So, what is our constitution doing? It is not trying to make us all the same. No. It is trying to create a common framework within which different people can live together. है ना? अब जैसे कास्ट है, एग्जाम्पल देखो. कास्ट है, कास्ट में हिस्टोरिकली जो लोअर कास्ट थे उनके अगेंस्ट कुछ गलत प्रैक्टिसेस होती थी, राइट? वी हैव आर्टिकल 17. व्हाट इज आर्टिकल 17? इट इज abolition of untouchability. Untouchability was one of the practice that was taken into consideration historically. ठीक है? So this was there. ऐसे ही we have secularism. Secularism में क्या है? स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है and it will respect all the religions. It will let people profess, practice different religions. तो क्या कर रहा है? डाइवर्सिटी को ही तो अकोमोडेट कर रहा है. अगर कोई इंसान इस्लाम को फॉलो करना चाहते हैं, इस्लाम को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट एनी काइंड ऑफ दिस थिंग, राइट? इट इन फैक्ट encourages all of this
कि करो आप जो जो भी रिलीजन आपको प्रैक्टिस करना है, प्रोफेस करना है, यू कैन डू दैट, एंड दिस इज देयर इन आवर फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर, राइट? ऑलराइट, now we come to the second function of the constitution. Okay, so let me okay let me not erase this, rather let me change my pen, the color of my pen in fact. All right, so we have gotten the very basic rules. लिख गए हमारे पास basic rules, राइट जो अकोमोडेट कर लेंगे डाइवर्सिटी को, जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, हम पीसफुली एग्जिस्ट कर पाएंगे. वी हैव गॉटन दीज बेसिक रूल्स बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. विल दे बी इनफ टू रन द कंट्री एवरी डे? यू टेल मी, यू थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. अभी फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. ये बहुत कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में आई एम टेलिंग यू, राइट? न्यू क्राइम्स यू सी, आप देख रहे हो, प्रिवेसी कंसर्न्स आर देयर. तो इसके लिए लॉज नहीं बनाने पड़ेंगे. एंड देर आर also other issues, right? See, this AI, blockchain, all of this, I don't want to go in such depth, but let me, इससे ना मतलब blockchain is something where you can't know the identity, so things like terror funding can be one of the issues associated to this. So we need some laws, right? Day to day there are number of things that are to be conducted. How many bridges you have to make? थोड़ा सा इजी जाते हैं. कितने ब्रिजेस चाहिए हमको, कितने स्कूल्स चाहिए एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, कितनी how many hospitals do we need? The basic and ultimate thing that a state is obligated to do, education and health, right? Not, if not obligated, but at least encouraged and expected to do. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज नीडेड. अब ये चीजें कौन डिसाइड करेगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा? अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो हु विल कम एंड इंटरवीन एंड से दैट नो, दिस इज रॉन्ग, this should have been done that way, not this way, right? So who will make day-to-day laws and decisions within the framework of the constitution? See, you have to stay within the framework of the constitution. Framework के अंदर ही रहकर, there are a number of laws, there are a number of things that have to be implemented. Who is going to do that? So let me, all right, so who will make laws, who will implement them, who will settle disputes? This is what the constitution answers. यही तो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन बनाएगा लॉज. इंडिया के केस में कौन बना रहा है लॉज? पार्लियामेंट बना रहा है ना. इन केस ऑफ से सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर्स बना रहे हैं. इन केस ऑफ दिस थिंग, states. Who is going to implement them? Executive. We have the chapters, पूरे डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं इसके लिए, राइट? जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट, सेटल कौन करेगा डिस्प्यूट्स? जुडिशरी. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, लेट मी टेल यू, अगर लॉज गलत बन जाते हैं, राइट, लॉज का प्रोसेस गलत है या लॉ गलत है, तो who will come and say that this law is wrong and it should not be implemented? It is not within the framework of the constitution. Who is going to come and say this? Judiciary is going to do this for us, right? एक हैशटैग करती हूँ,
पढ़ने की कोशिश करना. And if you want me to explain this, I will do this for you in a separate video. Basic structure doctrine. इसको you should try to understand this. बहुत ही basic level पे. Just Google it and say in the easiest way possible. Explain me what is basic structure doctrine. Right? Go for it just once. Okay, नहीं आता समझ में, just write in comments. I'll make a video for you explaining it in detail in the easiest way possible. Right? ठीक है. तो coming back, the constitution will answer the most important question, that who is going to run the day to day business, जिसमें there are laws to be made, there are laws to be implemented, there are disputes to be settled. Right? In other words, it specifies who has the authority to take decisions on the behalf of society. ठीक है? So constitution is going to tell all of this. See, there are different countries have different forms of government. There is monarchy. I am not going to teach you this. I expect कि आपको इतना पता होगा. There is dictatorship. If you don't know, write in comments. We'll get a video for you. Democracy. This is what India follows. This is what Constitution says, that we sorry. Just that we are a democracy, right? Ultimately, this is what Constitution says. Na? Hum democratic. Do you now recall something called democratic mentioned in the preamble when we studied about the nature of the state in the first lecture? That was the introductory lecture that we have had. I hope आपको याद आएगा. Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. इसमें ये है. This is now that we are going to understand. I hope you know democracy, but let me explain it to you because this is what is there. So, it is the ultimate source of power. The people are the ultimate source of power in the democracy. So, क्या हो रहा है? Let me explain this थोड़ा सा डिटेल में. ठीक है? देखो, डेमोक्रेसी है हमारे पास. What is democracy? हमने पढ़ा है. Of the people, for the people, by the people. But इसके आगे भी there are a lot of things. So, people are there. तो ये कह रहे हैं द डेमोक्रेसी में पावर विल फ्लो फ्रॉम द पीपल. ठीक है? नॉट द अदर वे अराउंड. पावर लोगों से आएगी. ठीक है? पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर. तो एक्चुअली क्या है, we can't really go to parliaments every day, debate, discuss there, right? So people, what do? They surrender अपनी पावर को एक इंडिविजुअल में सरेंडर कर देते हैं. This individual is the representative in the parliament, in the state legislatures. Now that we have third tier, so even in the municipal, thing also. So we surrender our power. इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो, ध्यान से समझो. हम सबके पास पावर है, राइट? टू So now let us understand democracy, है ना? थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको. ठीक है? See, power
will flow from people. ठीक है, people are the source of power in a democratic system of government. So we surrender, हम सरेंडर कर देते हैं अपनी पावर्स को एक इंडिविजुअल में, the one who is going to represent us in the parliament. अभी समझो पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, है ना? ओके, what are we doing? We are sending our representative to parliament. हम you know the population of India. Everyone can't really go to parliament, debate, discuss about laws and all of this. So what are we doing? We are going to send our representative to the parliament to debate, to discuss, to take our problems ahead in the parliament, tell people about whatever issues are there, how can they be solved, what is something that can be worked upon, and all of this. हमारी बात को कोई पार्लियामेंट तक पहुंचाता है. So what are we doing? We all of us have power. We are the source of power. हम अपनी पावर को एक इंडिविजुअल में सरेंडर कर रहे हैं. We are surrendering our powers in one individual. ठीक है? And then this individual will go to the parliament and talk for talk for us. है ना? हम हमारे लिए बात करेंगे, हमारे इश्यूज को सामने रखेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को सामने रखेंगे, हमारी डिमांड्स को सामने रखेंगे पार्लियामेंट में. दिस इज द मॉडल. यही है डेमोक्रेसी. एक इंडिविजुअल में, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या हो रहा है? देयर इज पावर इन वन इंडिविजुअल, है ना? पीपल डोंट हैव दैट पावर, बट हियर द पीपल हैव पावर. Moment they feels that this representative is not actually taking our issues sufficiently to the parliament, what are we going to do? We have free and fair elections. We will elect some other representative. Some other government will form who will work according to our demands, है ना? इसीलिए हमारे पास, हम प्रोटेस्ट भी कर देते हैं. We have right to protest, right? You will read it in chapter, I think in the chapter of rights. ठीक है? This is what democracy is. See, this is not what I should have told you, क्योंकि हम functions पढ़ रहे हैं, but ठीक है. Let's come back. In India, the constitution says that we are the democracy. Therefore, the ultimate source of power is the people. They elect their representatives. These representatives form the government and take decisions according to the constitution. This is what we've understood. Now, let's get to the function. यही तो function है. Constitution specifies who has the power to make decisions. किसके पास है? People के पास है ultimate तो, but people से जा रही है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास, है ना? और ये गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी? तो ये वोट होगा. ठीक है? डेमोक्रेसी है, सो you know vote is going to be there. One man, one vote, one value, है ना? We've studied this sufficiently in the chapter of preamble, universal adult franchise. Okay, so we have read two functions. दो फंक्शंस पढ़ लिया है हमने. ठीक है? फंक्शन वन, what was it? Just try and recall. I'm waiting, guys. सोचो क्या पढ़ा था पहला फंक्शन? Constitution provides a basic set of enforceable rules for the minimal coordination and peaceful functioning of the society. Something of this sort. ऐसे ही कुछ पढ़ा था, right? Second function is right there in front of you. See, उसको पढ़ लो एक बार. The constitution specifies who has the power to make decisions in a society. Because ultimately the constitution ने दे दिया एक minimal सा framework.
बट उसके अंडर बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे डे टू डे बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। एंड दीज डिसीजंस, कौन लेगा इन डिसीजंस को, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। हमारे केस में कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी बताता है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट सर्वाइविंग वन बट अ थ्राइविंग वन, एज इट सेज। ठीक है, so the constitution specifies who has the power to make decisions in a society and how the government will be constituted, कैसे बनेगी सरकार। okay? That was function 2. So we have done 2 functions. I hope it is pretty clear to all of you. Now let's get to the third one. ठीक है, ये थोड़ा जल्दी हो गया, it's good. Let me change the color of my pen. Let me get this. All right. Third function. यहाँ से थर्ड पढ़ रहे हैं, सॉरी, यहाँ से हम थर्ड फंक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, what if the government itself starts making the unfair laws? अब you have given the powers to the government. You've given your powers. Now what if it starts to make some unfair laws? It says कि भाई एक ही religion follow करोगे. You don't have freedom of speech. बोल नहीं सकते हो आप लोग. You can't really speak. अब यार आफ्टर 5 years होगा ना ये तो. Everything is going to happen after 5 years. 5 साल तक फिर क्या? If free and fair elections are to be held and government starts to make some unfair laws, you will still have to wait for 5 years. If there is, डिटेल में नहीं जाते हैं, बट फिर भी है ना, अगर सरकार बोल दे कि आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन नहीं है, नहीं कर सकते कोई भी प्रोफेशन, यू कैन ओनली से डू एक्स प्रोफेशन, गो फॉर एक्स प्रोफेशन। ठीक है, अगर सरकार बोल दे दैट वी विल अरेस्ट यू एनी टाइम वी वांट, I think I should, I don't know whether I should write it or not. All right, I should not. Sorry. I was going to write the article number of the fundamental rights, but I think you will get confused, so I'm not writing one. You tell me if you know, or if you can search it. Tell me in the comments कि अरेस्ट से बचने के लिए, नॉट एग्जैक्टली बचने के लिए, बट से आर्बिटरी अरेस्ट से बचने के लिए हमारे पास कौन सी प्रोटेक्शन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यू कैन टेल। ठीक है, सो ऐसे अनफेयर लॉज बन गए, अब क्या, तो कुछ तो लिमिटेशंस रखनी पड़ेंगी ना सरकार की पावर्स पे भी। ऐसे ही नहीं दैट वी हैव गिवन द पावर्स टू द गवर्नमेंट, नाउ इट विल डू व्हाटएवर इट वांट टू, इट विल एक्ट आर्बिट्रेरीली, अपने अकॉर्डिंग एक्ट कर लेगी भाई, ऐसा थोड़ी होने दे सकते हैं। दिस इज नॉट व्हाट वी कैन लेट हैपन। What are those limitations? Those limitations are fundamental rights, judicial review, constitutional supremacy, free and fair elections. Let's understand it one by one. See, I'm telling you all of this in so much detail. I know this. But you know, my endeavor is to help you understand things, not just mug it up. कि भाई ये थर्ड फंक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करेगा पावर्स ऑफ गवर्नमेंट को। When I will explain you each of these things कि fundamental right कैसे restrict करेगा या limit करेगा powers of government को, judicial review कैसे करेगा, you will be able to understand it better when you read something in depth. You understand the superficial things and you not only understand but also you memorize. जब इतना डेप्थ में पढ़ लोगे तो लेयर 1 तो याद रह ही जाएगी ना। So this is what I want to do with you. All right. So fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर। ठीक है, वन थिंग आई विल डू एंड आई विल नॉट राइट द आर्टिकल्स because this will make you a bit confused. Okay, so we have right to freedom of speech and expression. ठीक है,
This is something that we have right to life. ठीक है. We have many fundamental rights. Equality is the fundamental right that we have, that you can't really discriminate. ठीक है. Religion पे मैंने बोला था that every religion can be practiced and professed. This is what we have. Judicial review. अभी I have given you that hashtag also. Basic structure doctrine. उससे थोड़ा सा उसको नहीं पढ़ाऊंगी. But judicial review is कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ये लॉ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कर दो इम्प्लीमेंट, नो इश्यूज. बट इफ इट इज नॉट, if it is violating a provision, right, or say violating a basic structure of the constitution, then it will be declared void. Basic structure मतलब जो actually constitution का core है. Secularism is the core of the constitution, right? Even then you will have to read that. ठीक है, एक बार read जरूर करना प्लीज. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है, वो कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, justice, equality, fraternity, liberty, all of this, right? This is the core of the constitution. इसके अगेंस्ट अगर कोई लॉ बनेगा तो जुडिशियरी इंटरवीन करेगी, जुडिशियरी बीच में आएगी और उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर करेगी. सो दिस इज द लिमिटेशन. ये जुडिशियल रिव्यू डायरेक्टली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताते हैं कि जुडिशियरी बीच में इंटरवीन कर सकती है. जुडिशियरी कैन इंटरवीन इफ अ लॉ is not within the framework of the constitution. Okay, constitutional supremacy meaning the same thing, that within the framework of the constitution you have to frame a law, right? Then free and fair elections we have talked about. Now you will not forget that constitution places limitations on the government, right? So very beautifully written, I'll read it for you. The constitution does not believe in unlimited government. Unlimited government में believe नहीं करता constitution. किस में करता है? Limited government में करता है. It believes in limited government, where the government must function according to the constitution and cannot act arbitrarily. एक तरफा अपने according अपनी इच्छा से act नहीं कर सकते. कौन? The government. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये, एक्चुअली सॉरी ये गलत टाइप हो गया मुझसे स्पेलिंग. ठीक है. सो द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? दिस इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. बस इतना समझ लो, गवर्नमेंट को बाउंड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर इतना कह लो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इक्वल टू लिमिटेड गवर्नमेंट. आई एम टीचिंग यू दिस न्यू आइडिया. इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी. But I think if you will mention it in your answer sheets, you might impress your teacher. ठीक है, कहीं भी passing reference में या कहीं भी mention कर दिया, so it will give you an edge. So the constitution, this is a very beautiful line. Sorry, I don't know what's happening. All right. So the constitution gives the government a steering wheel, but it also puts brake on the vehicle. Steering wheel तो दिया, powers तो दे दी, people के थ्रू ही आई, but brakes भी लगा दिए. And this brake is nothing but the idea of constitutionalism, that is limited government. गवर्नमेंट को हम लिमिट करेंगे, the constitution will limit the government. ठीक है, तीसरा हो गया. The third function we have done. Therefore, the constitution does not give unlimited powers to the government. Instead, it places constitutional limitations on the government's authority, so that it acts fairly, responsibly, and according to the law. या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, and within the framework of the constitution. कैसे भी लिखना है. See, I have written this in a different, whatever font. Why? कि आपको एक्चुअली याद तो यही पॉइंट्स करने हैं ना. दैट वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर यू. सो वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड फंक्शन. लेट्स कम टू
All right, guys. Now we come to fourth function. See, there's one more function, fifth वाला भी है, but उसमें थोड़ी सी और अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगी. This is the last one for you today. Focus and let's get it done. Okay? चलो. So, every society has certain dreams and aspirations. Indian society का क्या है ड्रीम? कि यार एटलीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, see now I'm getting used to this pen, better handwriting than before. अनएम्प्लॉयमेंट ना मिनिमल हो, रिड्यूस्ड हो, पॉवर्टी रिड्यूस्ड हो, इन से इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस किया जाए, गुड एजुकेशन हो, एक्सेस टू गुड एजुकेशन हो, एक्सेस टू गुड एजुकेशन हो, एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर हो. ठीक है. These are the basic, dreams and aspirations that we have. बहुत ही basic level पे, right? So, Constitution ने limit तो करा है government को, that we have read तीसरे वाले function में, third function में. But please read this. It also empowers the government to work towards the goals or say the dreams and aspirations of the society. सोसाइटी के ड्रीम्स और एस्पिरेशन की तरफ भी काम करने के लिए एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को, सरकार को. राइट. चलो. सो इज इट अ रूल बुक? नो, इट्स अ विजन डॉक्यूमेंट. यार देर आर अ वेरी सॉरी, आई डोंट नो व्हाई. ओके. सो विजन डॉक्यूमेंट है कि अच्छी एजुकेशन हो देश में, सैनिटेशन हो, बेसिक चीजें, हेल्थ केयर हो, ठीक है, इनइक्वालिटी कम हो, वर्क प्लेसेस अच्छे हो. These are, somewhere there in your directive principles of state policy that you will read later in the later chapters, I believe. Okay. तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन देता है. It reflects the kind of society that we want to build. It is saying ना कि यार there is one article, I don't want to say the number, but जैसे abolition of untouchability है, there is abolition of untouchability. What is this? We want to build a society where there is no sorry, yeah, so we want to build a society where there is no untouchability that exists. We want to have a society where there is equality. We want to build a society where there is this there is this notion of dignified life. We want to build a society where religion can be practiced freely, even it is being, है ना? We want to build a society where due rights are given to the minorities. ये सब fundamental rights में से बोल रही हूँ मैं. ऐसे कुछ खास मुझे इतना नहीं आता है. It's all the fundamental rights that I'm speaking out to you without the article numbers. Right? अब थोड़ा सा DPSP देखो. We want to build a society where there is access to good health care. We want to build a society wherein there is affordable education. We want to build a society where there is no poverty. यार विजन तो यही है, या फिर कह लो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. इसकी तरफ हमने देखा था समथिंग कॉल्ड, I've told you about it in the preamble also, progressive taxation, है ना?
जो लोग ज्यादा कमाते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है, उनसे ज्यादा टैक्स करेंगे, और वो जो ज्यादा टैक्स लेंगे उसको यूज करेंगे इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर इन नीड, राइट, अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, तो द लास्ट वन, the constitution enables the government to fulfill the aspirations and goals of society by creating conditions for a just पढ़ा ना हमने, justice हो जिसमें, again something in the preamble in the first lecture. See, I told you I'll be giving you references from the lecture 1, that is preamble. Equality अभी हमने नीचे भी पढ़ा and it was there in the preamble. वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी, वेलफेयर हमने पढ़ा थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, वेलफेयर मेजर्स एंड ऑल ऑफ इट. सो गाइस, वी हैव डन ऑल द 4 functions in a very comprehensive manner, I believe. बहुत अच्छे से कराए हमने चारों फंक्शंस को. थोड़ा सा समराइज करते हैं ब्लैंक पेपर पे. देखो, ऐसे ही हम एक्टिव रिकॉल करने वाले हैं. सो वी हैव अंडरस्टूड. अभी वी आर समराइजिंग सेकेंड रिविजन. Technically the first revision, पहले तो we have understood first revision and second revision in the active recall session. So you will lock in it. Alright. चलो, functions बोलो यार, सोचो पहला function क्या था? What was the first function? एक बस कीवर्ड दे दो मुझे अच्छा सा. Rules, basic rules. For minimal coordination. अब यार नहीं आएगा एकदम से सेकंड फंक्शन याद, अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो कुछ मत करो, इससे ही तो कनेक्टेड है कि यार बेसिक रूल्स तो हो गए. डे टू डे बिजनेस है ना. See how beautifully the NCERT has connected all of it, that you will, if you remember one, you will be able to come to the fourth function as well, है ना. So basic rules for the minimal coordination, but what about detailed rules, है ना. What about these detailed rules? There is, it will tell you about the government, uska function, how a government will be formed and all of it. Third, is this government going to be limited or unlimited? Third आ गया, constitution will limit the government. Sorry. The fourth one and the last one. The endeavor of the constitution is to limit the government only. Is it so? No. It will also empower the government to fulfill the aspirations of the society, right? So finally, चारों कर लिए हैं. We have revised it. And now my last words, like in the every lecture. See, I am trying to put in all the effort that I can. I am trying to come up with some situations or anecdotes, है ना. फिर आई एम ट्राइंग टू मेक हेल्प यू रिवाइज. हमने टेक्निकली ये सेकेंड रिविजन किया है बीच में. इफ यू रिमेंबर, वी हैव डन दैट लेट अस समराइज के अंडर. रिवाइज भी हम कर रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. सी, दिस लेक्चर विल एक्सटेंड, है ना. 30 मिनट से तो ज्यादा ही होने वाला है. दिस इज समथिंग आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. सो सी, अगर मैं आपको डेमोक्रेसी नहीं समझाती, अगर मैं आपको जुडिशियल रिव्यू नहीं समझाती, अगर मैं आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं समझाती, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स नहीं देती, इट कुड हैव बीन 230 मिनट्स और अप्रॉक्स होता है ना. बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट ऑल टू यू so that you not only understand things but also internalize the feeling of these functions. तो इसमें तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा. Now I think you will be able to lock these functions in your head if you revise this after whenever you see this lecture. उसके within 24 hours just revise these 4 functions. Whatever I have written in bold,
बोल्ड और अलग से फॉर्मेट में. फॉर एन एग्जाम्पल दिस वन, this is what you have to learn, or you can learn it from your NCRT also, whatever you want, right? See this. And the first one, this. इसको मत करना, ये तो एनफोर्सिबल का मीनिंग दिया है. इससे कर लो ये 4 फंक्शंस को. जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक एंड जस्ट रिवाइज इट within the 24 hours of watching the lecture. It is going to help you a lot. ठीक है? So we have done this. Now we'll meet in the next lecture with functions and the other parts of the chapter. ठीक है? I'm trying to put in all the effort that I can. I expect you to put that effort as well. Comment me whatever I can improve upon. ठीक है? There is always going to be scope of improvement and I acknowledge that. ठीक है? All right. Bye bye. Take care. Study well.